Hello everyone. How are you all? How was your day? You enjoyed? What do you think of these kind of platforms? अभी ये जो सब कर रहा है PBI जहाँ पे हम लोग एक साथ unite हो सकते हैं. So this is the only platform in India, I guess, isn't it? It's good to see different kind of artists from different places, and so much to learn. Even I got to learn a lot of things from you guys, from the fellow hairstylists. So thank you all. Without wasting time, as we have a lot of time limitation, what I have done is I have prepped my models here, as you can see. What do you think? So what I did is I made a ponytail यहाँ पे. Ponytail के लिए I used bungee. Do you guys know about bungee? Uh, exactly. Exactly. A lot of people knows about it. If nobody knows, Iconic is there. So I made a bungee with the help of made a ponytail with the help of bungee, and then I prepped the hair with the tonging. I used a different technique for tonging the hair, and I'm going to show you a very interesting this tool. Do you guys know about this tool? People जिनको नहीं पता है, can you raise your hand? So I guess a lot of people doesn't know about this. So though कि इस hairstyle से इसका कुछ लेना देना नहीं है at the moment, but still I want to show you that we have something really interesting. So सबसे पहले इसको plug in करना है, very important. And at times it doesn't work. So change the plug. Oh, it's working. So it might take few seconds till that time. What I'm going to do is I will not waste my time. So I'm going to show you a very different look, something very easy. And what I want you to take from this class, you don't have to see कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या styling कर रहा हूँ. मतलब आपको दिखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको salon में जाके वही copy करना है और वैसे ही करना है. Okay? Idea is to adopt the techniques which I'm going to use. And अगर आप एक hair styling समझोगे, तो आप एक hair style copy कर पाओगे. If you'll understand one technique, you can create many looks out of it. So idea is to show you the technique. How many people knows about me? Does any one of you know about me? No one? I guess very few people. Myself, Gaurav Bhardwaj. I'm from Delhi. I'm working with looks at the moment. And I also represent Iconic nationally and internationally both. Recently, I went to Dubai to represent Iconic. It is the only brand from India who's going on international level and doing all these kind of things. And trust me guys, I felt really proud, that's why I'm sharing it with you guys. So when we went to Dubai and I was doing all these kind of looks, so people were amazed ki matlab, and they wanted to know me, they wanted to know about me. So when they came and asked me, where you from? I said India. They were like that. So I feel really proud that being from India, and then also we are not less than anyone else in the world. So I just thought of sharing it with you guys. Okay, so I'm almost done. No, this is not my look. So I'm just going to do only one section to show this. As I see a lot of women around there. तो आप लोगों के लिए कर्स करने के लिए बहुत इजी वे है, इवन फॉर मेंस आई गेस. एंड जब तक हम लोग कुछ डिफरेंट टूल्स वगैरह अपने सैलून में यूज नहीं करेंगे, इवन योर क्लाइंट्स विल बी लाइक एंड इवन कि उन्होंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं, सो विल बी अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर देम एज वेल. नहीं तो वो कहते हैं ना, अगर आप वो करोगे जो आप कर रहे थे, आपको वो मिलेगा जो आपको मिल रहा था. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस?
अगर आप, if you will do what you were doing, you will get what you have got. So to get something new, you have to do something new. So see, आपने देखा मैंने सिर्फ प्रेस करा और बाल अपने आप अंदर चले गए. And I'll wait for 8 seconds. उसमें you can control the seconds, temperature. And जब उसका टाइम हो जाएगा तो वो बीप बीप करने लगेगा. Not like गाली वाला बीप बीप. And there you go. Do you see the curl pattern? What do you get? So this is really interesting. So I thought I should share it with you guys. If you want to see more closely, you can go there and check out. Yeah. So a lot of time, you know what happens, आप लोग magazines वगैरह में देखते होंगे, people create waves, movies में, अगर हम सिर्फ directly बालों के ऊपर waves बनाएं, it is so difficult to make them stay, कि वो stay नहीं करेंगे और वो जो आपको wave भी चाहिए, वो आपकी तरह बाल move भी नहीं करेंगे. Though I can do it because I know the techniques. So one of the technique I'm sharing it with you guys, which is this hairnet. You can use this hairnet and ये जो hairnet होता है, अगर आप pictures वगैरह लोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने hairnet लगाया है. Like I'm gonna do it. Can you please look down? So there are 2 points. I'm going to take 1 point. And there you go. And I can take all the hair and I'm going to lock it. You guys can see what I'm doing? And this is how you can create, you can give any shape to it. So अभी ये जो मैंने किया है, ये मैंने बड़े बालों में किया है और सारे बालों को एक साथ किया है. अगर मुझे weaves वगैरह create करने हैं, तो I can divide sections. So I can take maybe 5 sections. So I just want to show you, then easily you can create any kind of wave. Abhi because मैंने सारे बालों को ले लिया है, so it is different. But I'm telling you the technique how you can do it the other way around. So this is one of the look. What do you think? And one more thing I want to tell you. Lot of time happens कि हम लोग बहुत clean ponytail, clean जब हमें styling के लिए बहुत clean look चाहिए होता है. So क्या होता है problem? All these baby hairs, they poke and they look so weird. So to control that, मैंने जानबूझ के नहीं किया, so that I can show you guys. So I'm using the diffuser. Diffuser का काम पता है आपको? क्या करता है? Air को diffuse कर देता है. Use the hairspray and the brush. And what will happen जब हम स्प्रे के ऊपर हीट देते हैं? It will get stiff हो जाएगा वो वहीं पे.
you look there? See now, the shine. So a lot of people were asking me कि इतना clean करने के लिए आप क्या करते हो? Gel लगाते हो? I said no, just the hairspray. And also अगर मैं इसको दोबारा brush करूँगा, सारा hairspray बाहर निकल जाएगा. Because you know that's why I would recommend to use brush, not the comb. Comb से क्या होता है? Comb से they will get negatively charged and they will start getting aesthetics. So can I have music, please? I want you to walk. Yeah. So what do you guys thought? It's done. So I wanted to show you more. What I did is I created something really fast, and now I'm going to do the another look by opening it, and then I'll reset again. How was it otherwise? Also, you know what you can do? जैसे आप लोग weddings के लिए for bridal, you make a low bun, which is juda. The same thing what you can do, you can create hair. But जो आपको market में भी जो hair net मिलते हैं, those you get very smaller. तो अब जैसे मैंने इतने सारे बाल इसमें कर लिए, वो उस hair में नहीं आ पाता. So that you can use these nets. Like that. एंड यूजुअली पहले क्या होता था हम लोग जब भी कोई भी स्टाइलिंग करते थे हम लोग क्लाइंट्स को बोलते थे जितने गंदे से गंदे आप बाल लेके आओगे उतना अच्छा स्टाइलिंग होगा सो नाउ इट्स नॉट लाइक दैट इसलिए मैंने क्या किया आज के टाइम पे आपको बालों को प्रेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन आई से प्रेप दैट मींस ब्लो ड्राई एंड देन यू टोंग इट यू ऐड सम मूवमेंट इन दी हेयर जैसे मैंने टोंग किया अभी बैको में किया दोबारा खोल दिया बट द मूवमेंट इज स्टिल देयर सो आई कैन give any direction to the hair. So I'm going to show you a very different technique. And you get these volume, I call it volume. आप लोग क्या बोलते हैं इसे? Stuffing, puff, chicken puff, veg puff. Volume, exactly. So volume is a better word because it gives volume. And it's not puff, it's poof. Yeah, so poof is the right word. Lot of people, even client comes and tells us कि puff कर दो. Puff is like, it's not a right word. तो अभी जब next time कोई बोले puff, तो पूछना कौन सा puff चाहिए? It's poof. I only use U pins. I don't use bobby pins.
सो इट डजंट मीन कि आपको नहीं करना है, आप कर सकते हैं, बट डू इट इन अ वे कि जो पिंस हैं बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए. एंड कभी भी जब भी आप स्टाइलिंग करने से पहले बेस बनाते हैं, सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्रिएटिंग अ फाउंडेशन बेस. कोई भी जब बिल्डिंग बनाना होता है उससे पहले हम लोग एक बेस बनाते हैं, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इट. एंड अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है, एंड देन फिर क्या होता है, क्लाइंट को नहीं हिलना, डांस नहीं करना है ना, मतलब गलती हमने करी एंड क्लाइंट सफर करे, सो दैट्स नॉट गुड कॉल. सो ऑलवेज चेक कि वो वेट ले पाएगा या नहीं ले पाएगा. इफ यू फील नहीं, देन सो आई फील ले सकता है ये वेट. सो कुछ सेक्शन में इस साइड करूंगा एंड कुछ सेक्शन में उस साइड करूंगा, सो दैट यू गाइस कैन सी. सो जो भी बालू की मूवमेंट है मैं उसको फॉलो करूंगा. एंड द बेस्ट पार्ट फॉर ऑल दीज वॉल्यूम्स इज जो पिंस है बहुत इजीली लग जाता है. अदरवाइज द अदर स्टफिंग, एक्चुअली दैट लुक्स लाइक अ स्टफिंग, हेयर स्टफिंग, उसके अंदर आप ऐसा यूपिन डालेंगे सीधा, वो अंदर होके ऐसा ऐसा कुछ टेढ़ा हो जाएगा. सो इट्स बेटर टू यूज गुड पिंस. So can you please look down? Can you see what is happening? What do you think? So don't worry, I'm going to also do it there so that you guys can see. Can you see the kind of movement is coming? So what I'm doing, I'm just following the direction, whatever the hair is giving it. Good morning. राइस खाए थे आपने बहुत सारे? And how many people are using Iconic in their salons? So I guess quite a lot of people. What do you think? How's the Iconic equipments and everything? Good?
And whenever you spray it, always keep do lot of movement. अगर आप एक ही जगह से स्प्रे देंगे तो क्या होगा, वहां पे बबल्स आ जाएंगे, तो आप देखोगे वो गीले हो जाएंगे बाल. So if you want that not to happen, so always give lot of movement. So what do you think? The kind of okay. And the best part, using U pins, अगर इसका visible भी होगा, just the tip, not the whole pin. आप लोग पिन लगाते हो, bob pin, और वो पूरी पूरी दिखती हैं. So that does not look nice at all. So something जिसमें सिर्फ hair दिखे, ना कि pins. Pins कभी भी दिखाने के लिए नहीं होते हैं. I guess lot of people उनका mindset ये होता है pin दिखाने के लिए होती है. So it's not like that, guys. Look down. Slightly here. Slightly up. Look up. एंड कभी भी जब आप हेयर स्टाइल कर रहे होते हो, यू नेवर जज. जब आप पास से देख रहे हो, आपको कभी नहीं पता चलेगा व्हाट इज हैपनिंग. सो ऑलवेज गो 2 स्टेप्स बैक एंड सी व्हाट इज हैपनिंग. सो देन यू विल गेट टू नो. पास से कभी नहीं पता चलेगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. And right after this, I'm gonna call all the 4 models जो आज हमने सुबह से करी हैं, so that you can see the kind of look I created. And then I'm gonna ask you few questions or few things to do it. And I have a lot of goodies over there for you guys. So आप देख रहे हो जो मैं पिंस है वो निकाल नहीं रहा हूं. I'm just doing the construction.
एंड ऑल्सो जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, you guys can also do it. It's just that whatever I'm doing is you go back to your salons, practice it. And Iconic also does India Beach Fashion Week. Do you know about this? India Beach Fashion Week. और आप लोगों को ये चीजें नहीं पता है तो make sure that you follow Iconic on Facebook and social network. और ये साल में 2 बार होता है इंडिया बीच फैशन वीक एंड उसके लिए हमें टीम भी चाहिए होता है. So if you do this kind of work, so you can send your pictures, we can select you and then you can work with us in backstage. Yeah, you will be able to see everything at right after this. Sorry? How I'm applying the pins? It's basically diagonal. So if this is the donut, so I'm not placing it like this. So otherwise इस पे जब बालों का प्रेशर पड़ेगा ये टेढ़ा हो जाएगा. तो मैं इसको सीधा करके and then I do it like this. तो then ये ज़्यादा weight handle कर सकता है. Yeah, diagonal. Yes, like this. So one more section, and then I'm gonna call all the models. Also guys, अभी जो करण ने आप लोगों से शेयर किया about Salon India in Mumbai. So I guess it'll be very good अगर आप थोड़ा सा पैसा अपने ऊपर invest करते हैं and then you go to Mumbai, you attend these kind of workshops. A lot of India's best hairstylists, even international hairstylists will be coming there. So it's like an investment basically on yourself. Now what I'm going to do is, again, yeah, so can we have some loud music please? Just a second. And now what I'm going to do is, मेजरली पिंस को निकाल के मैं वहीं पिंस लगाऊंगा जहां मुझे एक ही पिन से जो 3-4 स्टैंड्स को रोक सके.
And did you see what I did? How smartly I did? So basically that point of the donut volume was visible. So how I did it smartly, I used the pin which I used it for my earlier look, and I placed it there just to hide it. So thank you. Yeah. Let Round of applause for Gaurav Bharadwaj. thank you, thank you, thank you so much, guys.